खुशामदीद और सुबह खैर। अल्लाह ताला जो भी नेमत देता है उसकी कदर और उसका शुक्र जो है वो करना वाजिब है, इसलिए कि वो ख़ुद कहता है कि जिस नेमत का हम शुक्र अदा नहीं करते वो नेमत वापस ले ली जाती है, और जिस नेमत पे हम शुक्र अदा करते हैं वो उस नेमत में फिर अल्लाह ताला हमें और भी ज़्यादा बरकत अता करता है, खैर अता करता है। औलाद एक ऐसी नेमत और एक ऐसा तोहफ़ा है कि जिन लोगों को ये मैसर नहीं होता वही इसकी कदर व कीमत जानते हैं, और जिनके पास होता है बाज़ औक़ात वो बहुत बेकदरी करते हैं, उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता कि अल्लाह ताला उन्हें कितनी कीमती और कितनी खूबसूरत चीज़ से नवाज रहा है। बे औलादी या फिर बांझपन एक ऐसा मसला है कि जिसके लिए जो लोग औलाद की नेमत से महरूम होते हैं वो जोड़े बहुत तरद्दुद करते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं। पूरी दुनिया में इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारे इलाज जो है वो दरियाफ़्त किए जा चुके हैं, बहुत सारे लोग उनको अडॉप्ट करते हैं। आज हम एक नए तरीका इलाज पर बात करने जा रहे हैं जो कि स्टेम सेल्स के ऊपर बेस्ड है। ये क्या है मुझे भी नहीं इल्म है, लेकिन इसके जो बानी है, जो इसके मौजूद हैं, वो हमारे साथ हैं इस वक्त, जो कि अमेरिका में होते हैं, और इन्होंने PhD किया हुआ है रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा USA से, और उसके साथ साथ प्रोफेसर एमिरेटस भी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटकी में, और ये अपना एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं इसी तरह से, जहाँ पर इन्होंने रिसर्च की है, और इस रिसर्च के नतीजे में इन्होंने एक नई स्टेम सेल थेरेपी को इन्वेंट किया है, डिस्कवर किया है कि इस स्टेम सेल थेरेपी की मदद से जो बहुत सारे ऐसे जोड़े जो बहुत सारी और तरीका इलाज जो है उनको इस्तेमाल करने के बावजूद भी नामुराद रहते हैं, नहीं उनको औलाद की नेमत में असर आती, वो इसके ज़रिए फैज़याब हो सकते हैं। कैसे क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। Good morning to you. हाउ आर यू डूइंग? Doing extremely well. I'm happy to be here. Yeah, first of all, let me know, how about your visit to Pakistan? What are your comments about Pakistan? All I can say is that I love it. It's just been a wonderful experience. This is not my first time in Pakistan. So, you have been to Pakistan before? Before, yes, of course. And that's why I'm back, because I love it. Great. The people are great. So you were not scared of... You were not scared of the Pakistan which we know of. No. You are not terrorists. Yeah. You are as good as I am. Yeah, we are not. Yes. Thank you very much. It's good to hear from your mouth as well. Of course. Okay, so now what about the stem cell therapy? What's different in it? Well, stem cells is revolutionizing the way that we practice medicine anymore. So stem cells is not only good for our field of expertise, which is infertility, but is revolutionizing the way that we practice medicine. 10 years ago, I was before the Congress of the United States, and I told the Congress that we invented the most powerful cell in our body, which is the stem cell, which gives rise to all our basic tissues and organs that we have. And therefore, I told them that, watch out world, we're going to change the world. Really? Now, the stem cells can give rise to any tissue in the body. Right. The heart has stem cells, the liver has stem cells, the kidneys have stem cells, the skin has stem cells. That's why our skin always grows and we shed so many cells. Is because of the stem cells, the basic stem cells that we have in our system. Right. Now, we have discovered recently that men with no sperm cells, they lost them along the way somehow. Right. That we can micro-inject stem cells from their own bodies into their testes and initiate spermatogenesis, as we call it, which is actually the process via which sperm cells are produced in the testes. Right. And these stem cells can be taken from any part of the body and can be injected in the testes. Yeah, we can harvest them and tissue culture them in a petri dish. We multiply them, and we can, let's say we take about 1,000 stem cells. Right. And then we can grow them in the petri dish. Right. And we can make millions out of them. In a week's time, we can make millions. And from that, we introduce approximately about 100,000 stem cells per testes. Right. And give the testes the opportunity to produce sperm cells, which normally takes about 90 days. Right. And then in 90 days, normally we see the results. If we don't see results, that means that we haven't succeeded, and we're trying to find the way that why we do not have any success. Right. We're at that stage now where we're trying to find out who is a good patient that can respond to the stem cell, what we call testicular perfusion. Right. Now, the same thing is happening with women. If their ovaries... So that's what I was wondering, that if this is just particular one treatment only for men? No, I discriminate. I only treat men. Okay. I wish I could be treating women. As an she is the lucky one. Obviously you'll be Dr. treating Sajida. men always. Yes.
Yeah, but is the stem cell therapy also equally effective for women as well? Absolutely. Dr. Yes. Sajda? Yes. जी, तो डॉक्टर साजिदा और डॉक्टर पेनोस जो है आज हमारे मेहमान और हम आपके सामने बात कर रहे हैं बांझपन के ऊपर। जो डॉक्टर साहब ने अभी कहा कुछ उसका उर्दू में तर्जुमा भी हमारे उन नाज़रीन के लिए समझ नहीं सकते। मैं समझ रही थी कि आपको तो समझ आ रहा था, लेकिन डेफिनेटली बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके लिए ये बहुत मुश्किल है। उनको मैं ये बताना चाह रही थी कि एक्चुअली ये जो स्टेम सेल है ना, ये आप ये ना समझें कि यहाँ पाकिस्तान में इनफर्टिलिटी का हल एक ही है, क्योंकि मैंने आपसे लास्ट टाइम जब प्रोग्राम किया ना उसका मुझे बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक मिला। लोगों ने समझा कि शायद आई एम ऑलवेज देयर, कि मैं कोई सिर्फ हर एक का स्टेम सेल ही हम करेंगे। प्रोफेसर पेनोज़ेवोस ने, मैं ये समझती हूँ कि इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है और एक बीइंग अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, इन्होंने डेवलपिंग कंट्री का एक प्रोजेक्ट चलाया कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो उनकी हम हेल्प कर सकें। इसमें इंडिया, पाकिस्तान और बहुत सारे मुल्क थे। तो हमें इन्होंने क्या किया कि चूँकि हमारा अभी तक जो रिप्रोडक्टिव आस्पेक्ट है ना, हमारी टीचिंग, जितने टीचिंग यूनिट हैं उनमें ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर सकती, हमारे पास मॉडर्न वो मशीनरी नहीं है जिससे हम लोगों को, तो इनके लिए मैं समझती हूँ कि आप लोग इनको बिग हैंड दें, क्लैपिंग करें कि इन्होंने पाकिस्तान में हमारी हेल्प के लिए एंड्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान का क़याम हुआ है। अभी रिसेंटली हमने लाहौर में ये सेंटर शौकत खानम हॉस्पिटल के पास खुला है और इसका इफ्तिताह 12 सितंबर को हमने किया है। लेकिन इसमें गरीब आदमी का सुने ना, मैं बिल्कुल आपको मुझे पता था कि यू आर ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट पुअर पीपल, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमारा कंसर्न होना भी चाहिए। इसका बेसिक मकसद ये है, एक तो ये मकसद था कि इस प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनल लेवल की लोगों को ट्रीटमेंट दी जा सके। ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका मकसद क्या था कि जो लोग पुअर हैं उनको रिसर्च वाले एस्पेक्ट में लाकर उनकी हेल्प की जा सके। तो मैं, हमारे पास तो पहले कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। मैं पिछले 5 साल से सरगोदा में सर के उससे रिसर्च के साथ मैं एसोसिएटेड रही। मेरी ये सर्विसेज देखते हुए इन्होंने मुझे अभी रिसेंटली IVF क्वीन ऑफ पाकिस्तान का टाइटल दिया, जो मुझे ऑफिशियली 12 सितंबर को मिला है। और मुझे इसके लिए जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, मैं कहती हूँ उन्होंने भी मुझे इसके लिए मेडल दिया उसी दिन ही। वेरी ज़बरदस्त। अच्छा, जो डॉक्टर साहब ने बताया उसके मुताबिक ये कि स्टेम सेल थेरेपी जो एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें वो लोग जिनके यहाँ स्पर्म बनते ही नहीं हैं, वो मर्द, उनको भी इस तरीका इलाज से बेहतर किया जा सकता है। और औलाद पैदा होने के चांसेस कितने फीसद हो जाते हैं? कई लोगों को इवन अगर स्पर्म नहीं भी बनते ना और वो नहीं कंसीव नहीं कर पा रहे, उनके यहाँ बच्चा नहीं हो रहा, इवन उन लोगों के लिए भी इट इज़ अ गुड ट्रीटमेंट। ठीक है, लेकिन अब जैसे मैंने उनसे सवाल किया कि किसी भी जिस्म के हिस्से से स्टेम सेल्स लिए जा सकते हैं? जी, स्किन से लिए जा सकते हैं, लेकिन वो उसी मेल के होंगे ना, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन ये यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा मसला कंफ्यूजन हो जाता है कि जी आप टेस्ट ट्यूब बेबी कर रहे हैं तो क्या स्पर्म डोनर जो है वो फादर ही है एक्चुअली, या फिर बच्चे की वो नस्ब जो है उसमें कोई फ़र्क पड़ रहा है? यही तो हमारा झगड़ा है। हम मुसलमान हैं, हमने बायोलॉजिकल पेरेंटिंग से बाहर तो आ ही नहीं सकते। मुझे आपके पिछले लाइव प्रोग्राम में उसके बाद किसी की कॉल आई, उन्होंने मुझे कहा डॉक्टर साहबा ये आपने क्या प्रोग्राम किया ना कि आपने ये तो अभी यूरोप में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इंडिया में ये नहीं हो रहा। मैंने कहा मुझे बताएं, यूरोप में ज़रूरत है, वो तो स्पर्म डोनेशन कर रहे हैं, वहाँ तो एम्ब्रियो डोनेशन हो रही है, ये तो हमें मुसलमानों को ज़रूरत है। इस वक्त मिडिल ईस्ट फर्टिलिटी सोसाइटी और पाकिस्तान जैसे और इस्लामिक मुल्क जो हैं वो इनसे फैज़ याब हो रहे हैं। कुछ लोगों ने इनके आने पे यकीन करें, जो ओपोनेंट्स थे उन्होंने इस बात पे कहा कि ये इलीगल है, क्लोनिंग करते हैं। मैंने उन्हें कहा जी आप जाते हो ना, आप किसी फंक्शन में जाते हैं, वहाँ पे आपकी टेबल पे शराब भी पड़ी होती है, जूस भी पड़ा होता है, पानी पड़ा होता है, अब आपके पास मल्टीपल चीजें हैं, दिस इज अप टू यू, आप उसमें से जूस उठाते हैं। Very interesting. She just mentioned that you did the cloning, and in fact I came to know you're the first one among the pioneers who did cloning in the world. I'm the father of human cloning as well. Yeah. So how was that experience? I mean, making, we can say that making and creating a human being all by yourself. Well, it's fascinating. I mean, I've been treating infertility for the last 40 years. Right. And so I'm a pioneer, and my business is not just only treatment, but finding new ways of treatment. Right. Because very simply, the world evolves every day. Yeah, true. And we have to evolve with that. And therefore, that's why I'm in Pakistan. I am in Pakistan because I wanted to link the world with Pakistan. Right. Because Pakistan is a great country that needs a lot of work, a lot of help and work
And by no means we in America know it all. We Right. pretend that we do, but we're wrong. We learn from you as much as you learn from us. Great. Nice. Well, Okay. that's nice of you to say, and it's nice to hear from somebody who's just from other side of the world. And Well- we usually people do not look at us the way you are looking at us, the way you are commenting. That's The people that appreciable. taught me that I need to go out and find new ways is Robert Edwards, the guy that created the first test tube baby in the world. Yeah. And Louise Brown, those are friends of mine, and they motivated me to move on and find new ways. If somebody does not have the means via which to reproduce, we have to find a way for them. Look at the Muslim people, the Islamic people. The Islamic people have more what do you say, restrictions than the non-Muslim people. Right. Because of your religion. I know what your religion is. I study the Quran and I study the rules of the Quran. Right. And I know those things because I helped establish the Middle East Fertility Society, the Muslim society in the Middle East. Right. And therefore, I am the one that pioneered that idea that the Muslims need to start teaching themselves some things and teach the world about Muslims. Right. True. Rather than we teaching the Muslims about their religion. True. And so this is really the whole thing Okay, about now- what do we do. Yeah, thank you so much. I mean, for being so flattering. We really appreciate the way you are talking about Muslims and Pakistani. Sure. But I would also like to know, I mean, the outcome of your research. What are the common causes, reasons for infertility, known to you or to world as well? Well, each region, each country is different from the other. Right. And, And how about therefore, Pakistan? I think that we're seeing that the infertility is an epidemic today. And we're beginning to make it that way because of our lifestyles. We're obviously eating more pollutants, drinking more polluted water, breathing more polluted air, and all those things are environmental factors. Right. Also, we are beginning to think that we don't really have to reproduce until later. So this postponement alone is creating a big problem Right. for the couple. We had a couple the other night that came to see us, and he says, I knew that I had problems with my testes, but I didn't think that it's that big of a problem. I'm 36, and now I found out that my testes don't work. And he says, I didn't know I had a problem, but I didn't know how severe it is. Yeah. Now, if that man would get married earlier and married a younger woman, and let's say they finish reproducing at age 22, Yeah. maybe they wouldn't have that problem. Right. And so as you postpone that, it becomes a problem more for the woman than the man. But that doesn't mean that the man is off the hook. We also discovered that the man runs out of gas, as we say in America. Right. But not as fast as the woman does. Okay. Okay? But So- that's what, I mean, here in Pakistan or in Eastern countries, usually the man is considered the most fittest creature in the world, and they say that man never gets old. well, that's not quite true. Right. I've seen an awful lot of old men in Pakistan. Right. So, Right. more of the story is that Pakistan has different problems than America. Right. And And what we are the have to- common problems? What are Well, those common the problems are that I think that you need to improve your quality of life. You need to bring more hygiene to your lifestyle. You need to bring several things that really sort of we take for granted, and those things are really counteracting on your reproductive system. People need to understand that reproduction is a luxury item. God gave it to us so we can reproduce. But if we don't reproduce, we can still live a full life. Yeah. And so when we sort of violate the rules of the game, God takes it away from us. Yeah. Wow. And therefore, we need to take advantage of it while we have it. Right. What is the age you recommend of age of marriage? You recommend? Well, the woman peaks as far as reproductive age is concerned, be 22 to 26. Right. So those are the ideal years for reproduction in a woman. And for the man, it's between 28 to 32. Say. Right. So Thank you. So we have to take a short break. और उससे पहले मैं बताती चलो 22 से 26 साल वो कह रहे हैं खातून के लिए और for male how much? What was the age for male to be married? 22 to 26. No, male. Male. Oh, men, 28 to 32. 28 to 32. Yes. यानी इस उम्र में शादी हो जानी चाहिए लड़कों की और लड़कियों की शादी जो है 22 से 26 साल की उम्र में हो जानी चाहिए और फिर ये भी बता रहे हैं हमें अपना लाइफस्टाइल बदलने की ज़रूरत है जो ज़्यादा कॉमन मसला है जिसकी वजह से ज़्यादा बांझपन का मसला जो है वो आ रहा होता है। मज़ीद कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।